Welcome back. Prime Minister Manmohan Singh has left for Myanmar on a 3-day visit beginning today. It's his first visit to Myanmar and also the first visit by an Indian Prime Minister to that place after a gap of 25 years. The big focus is trade and investment links, development of border areas, improving connectivity between two countries and building capacity and human resources. During the 3-day visit, the Prime Minister will meet the country's iconic pro-democracy leader, Aung San Suu Kyi. Moving on, a day after Team Anna members Arvind Kejriwal and Prashant Bhushan held a press conference in Delhi, levelling serious allegations of corruption against 15 ministers of the UPA government, questions are being asked about whether there are contradictions within the team itself. While Kejriwal and Bhushan say that they have evidence to prove corruption charges against all these ministers, including the Prime Minister, Anna Hazare has said that Dr. Manmohan Singh is a simple man and there is no corruption case against him. अन्ना हजारे के टीम इसी तरह से बोलते रहते हैं, इन पर कोई भरोसा विश्वास नहीं है और अब जनता इनको नोटिस लेना छोड़ दी है। इनकी बातों में कोई दम और नहीं है। ये बिल्कुल अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह के बयान दे करके चर्चा में बने रहने का एक हथकंडा अपना लिया है और चर्चा में बने रहना चाहते हैं इस तरह के बयान देके। पीएम देश और दुनिया जानती है कि पीएम पाक साफ। The misdeeds of many of the ministers named by the team Anna have been in public domain for a long time. Allocation of coal blocks, 2G, the role of Mr. Chidambaram, the problem in the purchase of corruption, the purchase of aeroplanes for the Air India, all other subsidy issue, all these issues have been in public domain for a long time. Therefore, we would like the Congress to publicly ensure a credible action in the light of allegations made instead of whitewashing it. खेद की बात है कि अन्ना हजारे की जो टीम है वो ये कहती है कि नया कानून बनाओ तभी कुछ हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि आज के कानून में मैंने करके दिखाया है। हाँ, नए कानून बन जाए और अच्छा, बट उससे आने तक आप कुछ नहीं करोगे, ये तो अलोकतंत्र है। और कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि अन्ना हजारे की टीम जो है वो ज़्यादातर नक्सलाइट टाइप है और तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं। If this situation continues, on one side allegations against the government, on the other side government maintaining a silence, this will erode the faith in our system. The rupee saw a historic slide against the US dollar in the past week, and economists have attributed the devaluation to India's increasing trade deficits and inflation. The rupee has devaluated 13% since February this year and 24% since last August. Finance Minister Pranab Mukherjee said on May 22nd that the central bank, the Reserve Bank of India, would intervene when necessary to stop such a devaluation. But no effect was seen. The latest data released by the Indian Ministry of Industry and Commerce show that India's inflation was 7.23% in April this year, 0.34% higher than 6.89% in March. The higher the inflation, the greater is the pressure on the currency. And also, when the rupee depreciates, it also raises the inflation because the cost of importing all your goods is higher. So the government has to control the inflation. And Finance Minister Pranab Mukherjee defended the rupee downfall, blaming it on global factors. টাকার দাম কমছে অনেকগুলো কারণে। প্রথমত হচ্ছে মার্কেটে ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের একটা প্রশ্ন আছে। বাজারে ডলারের দাম বেড়ে গেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ইউরোপের আনসার্টেনটির জন্য আমেরিকাতে তাদের ইনভেস্টেবল সারপ্লাস ইনভেস্ট করছে আমেরিকার ট্রেজারিতে, বিকজ দ্যাট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দি সেফ হ্যাভেন ফর দ্য ডিপোজিট। এছাড়াও আমাদের এক্সপোর্ট আর্নিং কমে গেছে, যেহেতু ইউরোপ একটা ইম্পর্ট্যান্ট ডেস্টিনেশন এক্সপোর্টের, সেখানে ডিমান্ড নেই, ইকোনমিক রিকভারি পুয়ার এবং ফ্রেজাইল। অনেকগুলো মাল্টিপল কারণ রয়েছে, অনেকগুলো কারণের জন্যে টাকার দামে
কমাবাড়া হচ্ছে। আমরা সিচুয়েশন ওয়াচ করছি এবং যখন বিদেশ থেকে এফআইআই ইনভেস্টমেন্ট বা এফডিআই ইনভেস্টমেন্ট বাড়তে আরম্ভ করবে, এর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জিনিস হচ্ছে, একদিকে ফিসক্যাল ডেফিসিট বেড়েছে আর একদিকে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটও বেড়েছে, এক্সপোর্ট কম হওয়া ইম্পোর্ট বেশি হওয়ার জন্য। তেলের দামের ভোলেটাইলিটি আছে, এই সবটা মিলিয়ে তার একটা কিউমুলেটিভ এফেক্ট পড়েছে এবং আমরা ওয়াচ করছি সিচুয়েশন, যখন যেমন ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন নেওয়া হচ্ছে। Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot seems in no mood to cut tax on petrol prices that has been raised by rupees 7.50 by India's state oil companies last week. Speaking to media persons in Jaipur, Gehlot said his government had already reduced value-added tax from 28 to 26% in 2012-2013 budget on March 26. The state chief is reeling under intense pressure by the state opposition parties and people protests demanding to cut tax on petrol prices. आज बात करते हैं कि 2% कम करने के मायने ये थे, जब दाम बढ़े उस वक्त राजस्थान में पहले से ही हम लोग कम कर दें जिससे कि मार कम पड़े राजस्थान वासियों पर। उससे करीब 120 करोड़ रुपए का जनता को राहत मिली। और अभी जो पेट्रोल में के अलावा डीजल के अलावा केरोसिन के अंदर हम लोगों ने जो वैट पूरा फ्री कर दिया है, जो 14% था उसको 0 पे ले आए हम लोग। आज करीब 50-60 करोड़ रुपया जनता को राहत उस पर दी गई। BJP chief Nitin Gadkari, who celebrated his 55th birthday in the presence of party workers on Sunday, said that the NDA would form the government after the federal parliamentary elections in 2014. Gadkari was confident of NDA's victory under the leadership of Bharatiya Janata Party in those elections. He also said that he would definitely work for the upliftment of the poor and weaker sections of the society. Party workers and supporters enthusiastically participated in a colourful procession, adding glory to the celebrations. एनडीए का शासन 2014 या 2014 पहले जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का शासन दिल्ली में आएगा, यही मेरा सबसे बड़ा आह्वान है और मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। Continuing their drive against prostitution, Mumbai police raided 4 bars on Saturday, detaining around 110 girls who were alleged to be part of the immoral trafficking, along with 4 bar employees. The raid was a part of the ongoing drive against prostitution in the city. Senior Police Inspector Kashmira Police Station Anil Pawar said that a case would be registered under the Bombay Police Act. According to reports, more than 150 girls have been rescued in the last 1 month from bars, saloons and massage centers which were functioning as prostitution dens, and cases have been registered against the accused. 4 बारों में अचानक रेड हुआ, उसके तहत जितना भी कानून का उल्लंघन होते हुए जो 4 बारों के ऊपर लीगल एक्शन की जाएगी। उसमें से लगभग 50 के ऊपर लड़कियां मिले, अभी चालू है, टोटल फिगर बाद में बताएंगे। लेकिन जितने भी लड़कियां मिली और जितने भी बार्स के खिलाफ जो लीगल एक्शन वो तो 100%। The whole nation remembered the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, on his 48th death anniversary on Sunday. President Pratibha Patil, Vice President Hamid Ansari, Chief of India's ruling Congress Party Sonia Gandhi, and Delhi Chief Minister Sheila Dikshit paid floral tribute to Nehru at his mausoleum Shantivan in New Delhi. We'll move to a short break now. Stay with us.